क्योंकि अपने यहाँ पे ही आप देख लीजिए, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कोई भी चीज है तो उसके ऊपर बात नहीं होती है। एंड एक 12.5 years के बच्चे को जब बहुत तकलीफ होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा इसको सहन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये कॉमन है, ये तो होता ही है, नॉर्मल है। आई वॉज हैविंग अ सिवियर डिप्रेशन because of the medication and severe pain, again surgery. So overall 4 surgeries हुए वहां पे मेरे ट्रीटमेंट होते फोर होते। सर्जरीज 4 surgeries, ठीक है, 1 open surgery and 3 laparoscopic I went through. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सार्थक एंड हेल्थकास्ट पे आपका स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड नंबर 8 में हम एक ऐसे डिजीज के बारे में बात करेंगे जो कि कैंसर से भी कॉमन होता है, जो कैंसर से भी ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन फिर भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसकी अवेयरनेस लोगों और डॉक्टरों दोनों में ही बहुत कम है। ये डिजीज यंग एज से लेके ओल्ड एज तक कभी भी हो सकता है और इसका इंसिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। ये डिजीज का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। March has been marked as Endometriosis Awareness Month with an objective to increase the awareness about this horrible disease which a lot of women of today's age have to suffer. And often they have to suffer this in silence because there is nobody who understands them and listen to them. And today, for this, we are fortunate to have on this podcast एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने खुद इस डिजीज का सामना किया है और एक ऐसे स्पेशलिस्ट जो डे इन एंड डे आउट इस डिजीज को ट्रीट करते हैं। आई वेलकम टू दिस पॉडकास्ट डॉक्टर शिल्पा राव, एन accomplished senior dentist practicing in the city of Pune, who has herself suffered from the horrors of this disease, and Dr. Hemant Kanodia, who is a very celebrated expert laparoscopic surgeon practicing in Mumbai. जो Dr. Hemant is also invited internationally to operate on patients on endometriosis. So endometriosis सुनने में तो बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स वर्ड लगता है, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि व्हाट इज endometriosis. So I will explain to our viewers with a simple animation and let's hope that they understand. Hello friends, so let us understand what is endometriosis. Endometriosis फीमेल्स का एक ऐसा रोग है जिसमें कि यूट्रस के अंदर की लाइनिंग, जिसको कि हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम के सेल्स यूट्रस के बाहर बॉडी में अलग अलग जगह पे ग्रो करते हैं। जैसे मेंसेस के समय पे यूट्रस की एंडोमेट्रियम से ब्लीडिंग होता है, वैसे ही बॉडी में जहाँ पे भी ऐसे सेल्स ग्रो करते हैं वो भी ब्लीड करते हैं। मोस्ट कॉमनली ये ओवरी के सरफेस पे पाया जाता है, जिसको कि हम चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब्स के सरफेस पे पाया जाता है। यूट्रस की पीछे की सरफेस पे भी पाया जाता है। ये यूट्रस और लैट्रिन के रास्ता, जिसको कि रेक्टम बोलते हैं, उसके बीच की जगह में भी जमा हो सकता है। लैट्रिन का रास्ता, जो कि रेक्टम या बॉवल बोलते हैं, उसके सरफेस पे, और पेशाब की थैली, जिसको कि ब्लैडर बोलते हैं, उसके भी सरफेस पे, एंड बॉडी की इंटरनल लाइनिंग, जिसको कि पेरिटोनियम बोलते हैं, उस पे भी पाया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस बहुत रेयर केसेस में लिवर के पास और लंग्स में भी हो सकता है। इसकी वजह से मुख्य 2 प्रॉब्लम्स होती है। एक तो बॉडी में जहां ये एंडोमेट्रियम ट्रैप्ड होता है वहां सूजन हो जाती है, जिसके चलते बहुत पेन होता है। टिपिकली ये पेन पीरियड के समय होता है। दूसरा प्रॉब्लम, क्योंकि ये इंटरनली ब्लीड भी करता है और आसपास में सूजन हो जाती है, ये वजह से बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के साथ ये चिपक जाता है और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे से भी चिपकते हैं। So I hope this animation was useful, and now let us start with our questions. So Dr. Shilpa, मेरा first question to you is that how common is this endometriosis? First and foremost, Dr. Sarthak, thank you for inviting me over to your platform. ये आपने बहुत ये प्लेटफॉर्म बना के आपने बहुत अच्छा किया है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन पेशेंट्स तक और जनरल पब्लिक तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। So
एंड आई से विमेन क्योंकि ये बाकी जो सेक्सेस हैं उसमें भी पाए गए हैं, ओके, बट सेइंग दैट उन पे उतनी स्टडी नहीं है और उनको वो स्टैटिस्टिक्स में इंक्लूड नहीं किया गया है. सो ऑन एन एवरेज अभी देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड वी हैव अराउंड 190 मिलियन पेशेंट्स, which is like a very big number. हाँ, those are the identified cases and I'm sure उससे बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि अपने यहाँ पे आप देख लीजिए any disorder which is you know menstruation से related कोई भी चीज है तो उसके ऊपर बात नहीं होती है, तो आधे तो केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते होंगे. Correct. So that's the prevalence. Wow, of so endometriosis. it's far common than what we think and what we see. That's right. And I'm sure a lot of patients are not yet diagnosed or उनका suffering बस just continued है. Correct. तो मैडम जैसे आप you have very bravely faced this disease. So can you tell our viewers, can you share your journey, what has been so far with this disease? So I always had पेनफुल पीरियड्स. जैसे पेनफुल पीरियड्स बहुत लोगों को होते हैं, मुझे भी थे. एंड जब भी हम डॉक्टर के पास जाते थे, आई स्टार्टेड माई पीरियड्स व्हेन आई वाज 12 एंड हाफ. एंड एक 12 एंड हाफ ईयर्स के बच्चे को जब बहुत तकलीफ होती है और वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा इसको सहन करना पड़ेगा तुमको, क्योंकि ये कॉमन है, ये तो होता ही है, नॉर्मल है. तो आपको बच्चे को भी समझ में नहीं आता है, बिकॉज आपके साथ के जो बच्चे हैं उनको तो इतनी तकलीफ नहीं हो रही है, या तो वो उनमें उतनी सहन शक्ति है कि वो टॉलरेट कर पा रहे हैं उस चीज को. तो साइकोलॉजिकली वो बच्चे पे बहुत असर होता है, बिकॉज दे थिंक दैट दे आर नॉट केपेबल ऑफ एक्चुअली tolerating that pain. There is a problem with them. Okay, so something similar happened to me. 13 years के एज, 12 and a half 13 years के एज से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ. डॉक्टर के पास लकीली मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव है एंड दे केप्ट टेकिंग मी टू डॉक्टर्स. एक डॉक्टर के बाद दूसरे डॉक्टर, दूसरे के बाद तीसरे, बट एवरी टाइम इट वाज द सेम थिंग कि नॉर्मल है, होता है, पेन किलर्स ले लो. तो जो पेन किलर्स जो दिन में पहले शायद 2 बार लिए जाते थे, वो बढ़ते आई थिंक बाय द एंड ऑफ माई कॉलेज, आई थिंक जब तक मैं कॉलेज में आई, मेरे डेंटल कॉलेज में थी, आई यूज्ड टू फेंट आउट ऑफ पेन. मैं प्रैक्टिकल्स के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे, आई रिमेम्बर फेंटिंग आउट ऑफ पेन एंड आई यूज्ड टू टेक एटलीस्ट 4 or 5 painkillers every day, even though I knew कि that is more than the dose that I should be taking, but tolerate नहीं होता था. And for me to get functional, उठने के लिए, बेड से उठने के लिए मुझे उतने मेडिसिन की जरूरत पड़ती थी, बट कभी किसी ने ये नहीं बताया कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है. तो जैसे आई एम सॉरी मैडम, एक मेरा क्वेश्चन है कि लॉट ऑफ यंग फीमेल्स हैव पेनफुल पीरियड्स, राइट? तो हेमंत सर, जैसे कोई बच्ची है, उसको पेनफुल पीरियड है, तो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स कि जिसकी वजह से हमें पता लग सके कि उनको एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है? सार्थक, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. और आपका एनिमेशन तो बहुत ही सुंदर था. इट रियली पुट द मैसेज अक्रॉस एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू पेशेंट्स. आई कांग्रेचुलेट यू on this session, in this month of endometriosis awareness. हाँ, ये सवाल भी आपका बहुत ही important है कि how do we differentiate, because painful periods तो almost 100% females को होता ही है, some amount of pain. तो जो pain patient को, which really makes the patient, bedridden, okay, which gets progressive over a period of time, which hampers the routine daily activity and quality of life of the patient, okay, which causes so much debilitating pain that they can't carry out their routine functions. For example, if there's a school girl going to school, or a college going girl, if they are having a lot of absenteeism because of this pain, a female who can't attend her work regularly because of this pain, these are red flags. Okay, these cases should definitely be investigated because there might be something underlying. You have to do some kind of investigation, imaging studies to find out if there is underlying endometriosis. Definitely you have to rule out endometriosis in these cases because these could be beginning signs. So Dr. Shilpa classically had these red flags and she was denied of a correct diagnosis for a long time, I guess.
तो मैडम आपका डायग्नोसिस का जर्नी कैसे, आपको कब पता चला कि आपको एंडोमेट्रियोसिस है? So 2016 is when I was diagnosed with endometriosis, and that is also when I landed up in the emergency surgery. उससे पहले I was going to the doctors with the pain of constant stomach pain, which I had. And I was treated for PCOD, I was treated for IBS and all these things, because obviously endometriosis के symptoms काफी कुछ overlap करते हैं बाकी disorders से, but किसी ने भी endometriosis का नाम भी नहीं लिया था तब तक. But one day in the morning the pain was like so terrible that कुछ भी करके pain नहीं जा रहा था. Then after everything failed, they wheeled me into the surgery because they could see on the CT scan कि मेरे intestine ने work करना बंद कर दिया था. It stopped moving. And that's when they took me to the OT, and जब surgery हुआ they had to remove a part of my intestine क्योंकि सब चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई थी. सब चिपका हुआ था, intestine में block हो गया था, तो उसके वजह से वो intestine का part निकाला, उसको फिर बाद में biopsy के लिए भेजा, और तब जो है उसमें रिपोर्ट में endometriosis आया. And the surgery was pretty extensive. It was an open surgery. I was in a bad pain, and I was not given food and water for about 12 days because the intestine motility was not there at all. So that was how the journey began of diagnosis, so-called diagnosis. लोगों को पता लगता है कि कोई बीमारी है तो लोगों को टेंशन होता है, बट मुझे एक तरह से रिलीफ मिला था कि कुछ नाम तो आया. सिम्टम्स तो बहुत टाइम से थे, बहुत सालों से था, but at least there is some name to that now. I was not making it up. It was not in my mind, so there was certainly something which was going on within me, So that's how it started. Can I make a point on this, if I can come in between? Yes. See, the important is the pain score जो हम score करते हैं, because see, this is the story of so many referral patients we get from all across India and from out of India also, the same story. Okay, so once it is very important that we score the pain of these patients so that हमको intensity pain की समझे. So we have many visual analog scores or charts, or a score of 10 also. 10 में से हम patient का pain score करते हैं, तो patient at least वो pain को objectify कर पाता है. And you get an idea, say on 10, if the pain is more than 7, 8, 9, 10, then it is a significant pain to the patient. So it's very important to score the pain, and the pain score is very important for evaluation of the initial symptoms. So sir, recently मैंने पढ़ा था कि the average time taken to detect this disease is around 7 to 10 years. तो 7 से 10 साल तक तो किसी का निदान ही नहीं हो पाता है. तो why is it so? ऐसा क्यों होता है? See, because endometriosis is now, according to the latest theories, it actually वो embryonic stage में जब fetus develop होता है तभी abnormal migration of cell and abnormal development and differentiation of certain cells होते हैं जो lead to endometriosis later in life. वो trigger बाद में हो जाते हैं. Okay, they get triggered later on and manifest later. So these can develop silently within the body. Okay, in many patients they might not have symptoms. And this is the puzzle or the enigma of this disease, that sometimes the symptoms and the clinical findings don't match, or the surgical findings. So various stages होते हैं endometriosis के, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, depending on the severity. Right? So ये तो सर disease की बात हो गई जैसे, but the factor of lack of awareness also playing into this. That's a major important factor which plays into this, because these red flags many times get neglected and the disease progresses. It is a progressive disease. See, this is not cancer, because cancer के cell तो दूसरे जगह metastasize हो जाते हैं, but this is a locally invasive disease similar to cancer. Okay, जो not only uterus तक restrict रहती है, आजू बाजू के जो organs है like bladder, intestine, जैसे आपने animation में दिखाया, rectum, latrine की जगह सब involve हो जाते हैं because of local invasion. और ये cells की खासियत रहती है that they develop on their own, they don't need any support. Okay, they grow on their own, they support themselves and grow on their own. So it's like something similar to cancer, but it is not cancer. It is a benign disease, but it is very invasive. That's why. तो इसको जल्दी डिटेक्ट करने का कोई भी तरीका है हमारे पास में?
Yes, we have lot of tests. There is no blood test या initial screening जैसा बोल सकते हैं. It doesn't, because the obvious manifestation is not seen. There's no external manifestation on the patient जो हम देख सकते हैं और इसको बोल सकते हैं this could be endometriosis. There's no certain blood test, although काफी इसमें research चल रही है. If they can find out some biomarkers जिससे हम predict कर सके या diagnose कर सके या screen कर सके patients को. At the moment, the only thing we have is the symptoms, the examination of the patient, and one important factor is the imaging, like good ultrasound study, and if that is not enough, a good MRI, magnetic resonance imaging, which may help in picking up these lesions. But the final diagnosis is nothing is picking up and the patient still has pain. Then the gold standard is laparoscopy, to put in the scope inside and see the lesions. आपको दिखेंगे तो वो आपको समझेगा कि this is endometriosis. तो जैसे मैडम आपका डायग्नोसिस happened by chance because you went in for the surgery for a different thing, and it was found that you actually had endometriosis. So this was to our viewers who don't know what is laparoscopy. Laparoscopy एक ऐसी मोडालिटी है सर्जरी का जिसमें पेट के अंदर बटन जैसे होल के थ्रू दूरबीन उतारा जाता है और उसको कैमरा के थ्रू व्यू किया जाता है पेट के अंदर के ऑर्गन्स को. तो डॉक्टर शिल्पा हैड टू गो एंड ओपन सर्जरी फॉर दैट, एंड उसके माध्यम उसकी वजह से हमें पता लगा. तो मैडम इसके आगे की स्टोरी क्या है? So एक बार डायग्नोज हो गया तो then I was referred to a gynecologist, and then I was put on injections called Leupride. Okay. ठीक है, so वो इंजेक्शंस दिए थे so that they could induce menopause, and वो डॉक्टर के हिसाब से ये था कि एक बार आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे तो एंडोमेट्रियोसिस अपने आप श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, वो श्रिंक हो जाएगा and then slowly it will go off. That's what I was said, and eventually what she was also saying is then probably कुछ टाइम के बाद then you can conceive and it will solve the problem. And I agreed, and that was probably the biggest mistake that I made. So Leupride put my body into shock first of all. सारे menopause के issues जो होने चाहिए थे सब हो गए, and उसके बाद फिर भी मेरे symptoms नहीं गए, and then she put me on some other hormone medicines. Hormone medicines के side effects बहुत हो रहे थे मुझ पे, because और उस बीच में then I had another episode of severe pain. तो फिर मेरे को सेकेंड सर्जरी के लिए लेके गए. तो उस टाइम पे देन आई हैड आई थिंक अपेंडिक्स का या किसी का तो हुआ था. बट अगेन अभी जब मैं वो सारे डॉट्स कनेक्ट करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि क्या था. तो सेकेंड सर्जरी हुआ, बट अगेन वही हार्मोन ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट दे दे के एंड ऑल शी वाज टेलिंग मी इज कंसीव एंड हैव अ बेबी. बट मैं इतने तकलीफ में थी, इतना पेन था मेरे को कि मुझे I couldn't think of anything else, because for me to bring up a child I have to be fine. Having a child is easy, bringing up a child is difficult, right? So I told the doctor, I'm in so much of a pain, you'll have to give me some respite from this. So she was just not doing anything else. एक medicine change करके दूसरा medicine, and in that process of side effects I was having a severe depression because of the medication, and severe pain, again surgery. So overall 4 surgeries हुए वहाँ पे मेरे treatment होते 4 surgeries. ठीक है, 1 open surgery and 3 laparoscopic I went through, and but at the end of it result कुछ नहीं मिला मुझे. मैं उतने ही पेन में थी, मैं उतने ही तकलीफ में थी, एंड जब भी मैं डॉक्टर से बात करती थी all she could say is either you stop reading Google, which I was not actually, or you are thinking too much, or you have a baby, go through an IVF, or last thing but not the least, आपको surgeries का शौक है. I mean, I've heard that. You know, so, and it is not easy for the patient. The patient is already in so much pain. The patient is already mentally exhausted, going through so many things. But and when the doctor says that, it is the toughest thing to hear. So that was it, and that's when I decided that I have to change the doctor. This is not happening.
So finally I went to some other doctor and he diagnosed adenomyosis also. I had endometriosis और उसके साथ साथ adenomyosis था जो uterus का condition है. I was constantly bleeding for I think 3 months. And I was going, obviously I had severe fatigue. So finally the doctor told me that there is nothing else that you can do besides a hysterectomy. So आपको आपका यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा, because जिस स्टेज पे आप अभी हो इसमें और कुछ नहीं हो पाएगा. So my chance of having a baby was gone. So, and but I had to accept it because there was nothing else. So this was at when age? I was 39 at that point in time. Yeah. So I was 39, and a surgery which should have taken me, I think, 3 hours is what he had said. It took him about 8 hours because everything was stuck. Everything was stuck. सब चिपके हुए थे. Ovaries को सेव करने का बहुत कोशिश किया. He was like, we'll try at least 45 तक किसी तरह से खींचें. बट नहीं हुआ, तो सब कुछ ओवरी, सर्विक्स, सब कुछ निकालना पड़ा, यूट्रस सब कुछ हो गया. एंड अनफॉर्चुनेटली HRT भी नहीं ले पाई बिकॉज आई हैव अदर इश्यूज आल्सो. So now I do have a lot of problems. Obviously, menopause, early menopause, you know how it is. Early menopausal issues. I have my bone pains. I have my joint issues. So जो चीजें मुझे जब मैं 55-60 की होने चाहिए थे तब होते वो अभी है मेरे को. So I think I've aged too fast, but that's okay. So that's when I decided that I think we have to do something about creating awareness, because doctors, patients, किसी को भी awareness नहीं है इस चीज के बारे में. Very, very brave of you. So Sarthak, can I put in a few comments as to how this condition could have been, sort of avoided, if you allow me few minutes? That will be very helpful. Yeah, the first thing she said is the medical treatment. Medical treatment is okay. Many times the first line of management in these conditions, we all accept that. But there is different types of endometriosis. There is deep endometriosis, there is superficial endometriosis, there is stage 1 to stage 4. All don't respond to medical management, especially the deep infiltrating stage 4, because I told you these are autonomous cells. ये अपने आप काम करते हैं. These are estrogen dependent. They secrete their own estrogen. This is estrogen dependent disease. They secrete their own estrogen. सर हमारे हार्मोन होता है बॉडी में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो ओवरीज से भी सेक्रेट होता है और बॉडी के हाइपोथैलेमिक एक्सिस रहता है उससे भी सेक्रेट होता है, जिससे ओव्यूलेशन वगैरह जो भी होता है, राइट. So this is an estrogen dependent disease. Okay, but the problem is it is not dependent on estrogen from outside. They can make their own estrogen. ये खुद अपने आप काम करते हैं. They promote their own growth, as I told you. Okay, and they are clonal cells. They keep on dividing amongst themselves over a period of time. And they don't have progesterone receptors. The entire concept of medical treatment is they are progesteronic agents which try to suppress the entire hormonal axis, like the estrogen and progesterone, which is in the body. Since estrogen progesterone होता है तो pseudo menopause state होता है और pseudo pregnancy जैसा state होता है where everything gets suppressed. So the belief is that इसको suppress करेंगे तो ये lesions सो जाएंगे, but ये temporary सोते हैं and बहुत बार respond भी नहीं करते हैं ये medical management को. तो तभी surgery comes in. And before surgery, if her eggs could have been preserved, at an earlier stage of this disease, if eggs could have been preserved, she would have been, probably she had a good chance of pregnancy. So everything could have been avoided if all these timely management would have been done. ये medical management का मैंने इसलिए बोला because it's given for a prolonged period of time. हमने देखा 2-3 साल तक try करते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है. And ultimately, people who deserve children, they ultimately come with so much pain that they want everything out. वो हमसे आके plead करते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, remove everything, we don't want a child, as we have seen Shilpa's condition. And this is working for us. अगर आप endometriosis के complications को summarize कर सके, if it is not treated at the right time. Yes. So one more thing is, before the complications, I'm going to go on something known as a very known term as gaslighting. As Shilpa said, ultimately a doctor said कि आप बहुत सोच रहे हो. This is gaslighting, is where आप patients के symptoms को neglect करते हो, आप उसको psychological factors को attribute करते हो, आप उसको बोलते हो ये आपका खाली वहम है, ये ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं, ये आपका thinking process है. This is called as medical gaslighting, which should be avoided. Okay. As far as complication goes, ये locally invasive disease है.
ये कोई भी ऑर्गन में आजू बाजू जा सकता है, जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मोइड, रेक्टम, जहां से स्टूल पास होते हैं, आगे जो ब्लैडर की जगह रहती है, साइड में जो यूरेटर की नली रहती है जो यूरिन किडनी से ब्लैडर तक लेके जाती है। ओके, ये सब वाइटल ऑर्गन्स हैं। दीज गेट इन्वॉल्व इन अ वेरी क्रिटिकल मैनर, एंड व्हेन वी आर ऑपरेटिंग, दिस इज अ वेरी हाई रिस्क सर्जरी। तो ये कोई भी ऑर्गन को इंजरी भी हो सकती है व्हेन वी आर ऑपरेटिंग, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट वी आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज इन्वॉल्व इतना रहता है इन एडवांस ग्रेड। सो this surgery is also very complicated and high risk and critical, so patients need to understand this. तो सर जैसे आपने बताया कि इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिजीज टू ऑपरेट ऑन, तो क्या एवरी गायनेकोलॉजिस्ट कैन डू दिस सर्जरी और ऐसा नहीं होता है? Normally gynecologists, in their residency program, they are not exposed to these complex procedures, because I told you gynecologists mainly focus on the uterus. Okay, जो आजू बाजू के ऑर्गन्स रहते हैं वो इतना फोकस नहीं करते, बिकॉज वो पार्ट ऑफ रेसिडेंसी ट्रेनिंग में नहीं है अभी भी। Okay, so routine gynecologist might not be able to manage these cases, at least the complex cases. Okay, so there are certain surgeons who are gynecologists but who are endometriosis excision specialists. Now, why are they called this? Because उन्होंने special interest दिखाया है ये area में. They have honed their skills, to become proficient to manage these conditions like the ureter, the bowel, and the bladder. So these are people who have special interest in this area, have experience in managing these cases, and they should be managing these cases. And it is always better that the first surgery is done by the most experienced person in this field, because the first surgery is the most important. Because हम बहुत सारे redo cases करते हैं operated by routine gynecologists, and then the pain is still persisting, as you saw Shilpa's, and then the mess inside is just too bad. It is very dangerous for the patient also and for the surgeon also operating, because it is a very bad situation inside. So that's why the first surgery should be the best surgery by the right person at the right time. तो क्योंकि ये डिजीज बार बार होता रहता है, इफ आई अंडरस्टैंड इट करेक्टली, उसको अगर सही तरीके से पूरी तरह से निकाला जाए तो इसका रिकरेंस भी कम होता है एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पेशेंट इज आल्सो गोइंग टू इम्प्रूव। लेकिन अगर जैसे सर डॉक्टर शिल्पा के केस में हुआ है कि आई थिंक शी हैज अंडरगॉन सो मेनी इनएडिक्वेट सर्जरीज, जो कि थोड़ा सा निकाला या प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हुआ, तो उनका पेन जो है कंटिन्यूअस, उनको बॉडी में पेन हो रहा है। तो अभी मान लो लास्ट सर्जरी जो हुआ है उनका काफी एक्सटेंसिव हुआ है, लेकिन फिर भी आई थिंक डॉक्टर शिल्पा यू माइट बी एक्सपीरियंसिंग पेन स्टिल, बिकॉज क्योंकि इतना समय से आपका बॉडी पेन में है। तो सर ये क्यों होता है कि सर्जरी के बाद भी क्यों ऐसे पेन हो सकता है? See, it's very simple. Endometriosis is something similar to diabetes. You can't have a complete 100% evacuation or, get rid of the disease completely. Okay. So it is a disease where the body tendency is there to have these endometriotic cells, or microscopic cells भी रह सकते हैं. Okay. The aim of the surgery when indicated is optimal debulking of the disease. आप उसको zero नहीं कर सकते. जो सर्जन को विजिबली अंदर इम्प्लांट्स दिख रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस के, जो एडिशंस है, वो सब आप क्लियर कर सकते हैं as much as possible. But जो माइक्रोस्कोपिक डिजीज है, that might remain inside and there is a chance of recurrence. Now the recurrence, if you say, there are a lot of studies, there is no definitive percentage, but if I want to give one number for a take home message, after 2 years the chances of recurrence can be 20%, after 5 years around 50%, just to remember it easily. But the chances of recurrence are more when the manifestation of disease is early, like in young patients who have undergone surgery very early in life, chances of recurrence, because उनका estrogen तो चालू ही रहने वाला है, right? They are going to have that cells for a longer time. So chances of recurrence in them, chances of recurrence in those which are having high body mass index, like obese people, is because they have high estrogen content. उनमें ज़्यादा रहता है. So these are certain factors. But I feel that if the first surgery is done rightly and optimal debulking is done, then the chances of recurrence are less. And even if the recurrence occurs, the quality of life is not so hampered. The pain is sort of bearable. It is not debilitating and, which is, really destroying
your quality of life. Because हमको ये समझना है इसमें खाली physical disability नहीं होती है. This causes mental problems, psychosocial problems, societal pressure, and there is economic repercussions also, because there's loss of productive years of that female's life. She can't contribute to the society in some manner because she can't work or whatever. We have to understand these things. जैसे हमारे व्यूअर्स के लिए डॉक्टर हेमंत ने बताया कि जो इसकी सर्जरी है उसको पहला तो डिले भी नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि वो ऐसे डॉक्टर के पास करना चाहिए जो उस डिजीज के स्पेशलिस्ट है या स्पेशल इंटरेस्ट रखते हैं. तो आई थिंक दे विल बी एबल टू डू अ बेटर जस्टिस देन एनी अदर गायनेकोलॉजिस्ट. करेक्ट? तो शिल्पा मैडम, आर देयर एनी रिसोर्सेस अवेलेबल ऑन द नेट which the patients can refer to and seek support? See, for me, what helped me after the surgery was, I think when I go to the doctors, I think we have doctors like Dr. Hemant is there. I mean, obviously, Dr. Vimmi is a good friend. So I used to speak to her after my surgeries were done. And I think India में बहुत लोग उस टाइम पे नहीं थे जो सोशल मीडिया पे उतना बात करते थे endometriosis के बारे में. So, but abroad there were a couple of them. जैसे Center of Endometriosis Care is one of the good ones which really helped me. That Dr. Gabby Mowad was really helpful. Endometriosis Summit was really helpful. So इनके वीडियोस देख देख के समझ में आता था कि क्या है. Then you have advocates like, अभी यहाँ पे तो अभी now I do advocacy like, I mean बहुत करती हूँ so that लोगों को समझ में आए मेरे हम लोगों का चैनल के थ्रू. बट उसके अलावा बाहर हैं जैसे हेदर है, एमी है, there are a couple of other people who are like really really helpful. And उनका कैसा है, वो प्रॉपर रिसर्च करके फैक्ट्स सामने लेके आते हैं. इट इज नॉट अ फार्मा बेस्ड वीडियो दैट दे मेक कि ये लो और इससे ठीक हो जाता है या उससे ठीक हो जाता है. ये वैसा नहीं है. सो उससे बहुत क्लैरिटी मिलती है. प्लस ऑल्सो व्हाट आई वुड वांट टू टेल पीपल हु सफर फ्रॉम एंडोमेट्रियोसिस इज take support from your peer group, from people around you, because अकेले आप फाइट नहीं कर सकते हो. इंटरनेट पे यू हैव, आई मीन, जबकि लोग बोलते हैं इंटरनेट से आपको नहीं देखना चाहिए ज्यादा हेल्थ चीजें जैसे पहले बोला जाता था, बट आई थिंक इंटरनेट इज अ बून. बहुत चीजें हैं जो हमको पता नहीं होती हैं जो इंटरनेट से पता लगती है. जैसे आपका अभी चैनल है, आई थिंक पीपल कैन लर्न फ्रॉम व्हाट यू आर टॉकिंग बिकॉज यू टॉक फैक्ट्स. अभी ये चीजें लोग, आम जनता को, जो नॉर्मल लोग हैं, उनको तो नहीं पता होती हैं. अभी आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो पता लगती है. So internet is a boon. I think there are a lot of other good resources which you can go through. Nancy's Nook is one of them. Nancy's Nook is like it's like a Bible when it comes to endometriosis. So I think there are a few of them, yeah, which are like really good. Thank you so much, Dr. Shilpa. आपने जो आपका स्टोरी शेयर किया, and thank you so much, Dr. Hemant, for your inputs. I think through this podcast we intend to reach out to those women who are suffering in silence and who have no support system whatsoever, not even from their peers, family members, and not from doctors also. और हम डॉक्टर्स को भी इसके बारे में और एजुकेट करना चाहते हैं. And I think we will continue our efforts, and we will soon come with part 2 of this podcast on treatment of endometriosis related pain and infertility. So thank you so much for coming to this podcast, and I think we have done justice to our viewers. Thank you. Thank you so much. तो दोस्तों, जैसे आपने डॉक्टर शिल्पा की स्टोरी को सुना, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं समाज में जो इस पेन के थ्रू जा रहे हैं, एंड वी वांट टू रीच आउट टू दीज पेशेंट्स. आई होप कि हेल्थकास्ट के माध्यम से आपको हेल्थ के रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेशन से फ़ायदा होता रहे, एंड वी होप कि आपके माध्यम से हम इस इंफॉर्मेशन को और फैला सके. वी आर वेरी सून गोइंग टू कम अप विथ पार्ट 2 ऑफ पॉडकास्ट ऑन एंडोमेट्रियोसिस, और इस बार हम ट्रीटमेंट पे और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे. सो कीप ट्यून्ड and please like, share and subscribe our channel. Thank you.